गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बताने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड सम प्रॉब्लम्स ऑफ 13.1 एक्सरसाइज। नाउ रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज and taking here question number 13 first as, so see what is question number 13. An instructor has a question bank consisting of 300 true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. इसमें आपका इजी और डिफिकल्ट जैसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपकी कंडीशनल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, जिसमें नेक्स्ट जैसे आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपका सेलेक्ट किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जबकि आपके पास गिवन है दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने फार्मूला बताया था कि फर्स्ट इवेंट जैसे आपका हो गया, सब कुछ करेंगे जो फेवरेबल इवेंट्स रहेगा, और यह जैसे जो आपका इवेंट्स इवेंटेड हो चुका है इन क्वेश्चंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव यूजिंग द फार्मूला हियर P of E of P of equal to P of intersection F divided by P of F. So see first, what is the sample space here? The total number of questions as we are given 300 easy true false question, 300 easy true false question, 200 difficult true false question, and 500 multiple choice question which are easy, and 400 difficult multiple choice questions. So there are total questions are 1400. It is number of S, total sample space. According to question, suppose किया कि E, the event that selected question is an easy question. आपसे पूछ रहा है कि what is the probability, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, what is the probability that it will be an easy question. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इजी क्वेश्चन होना चाहिए जबकि आपके पास गिवन है कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो second events F, we suppose here the event that selected question is a multiple choice question. Suppose क्या किया हमने, multiple choice questions F event को हमने suppose किया, then number of E, ये जो आपका easy questions है 500 questions आपका दिया गया है easy multiple choice question और 300 दिया गया है easy true false question. तो the number of easy questions are here 800. So P of E equal to number of E divided by number of S, 800 divided by 1400, it means 8 by 14, the probability of P of E. Similarly, P of F, F is as given events for multiple choice questions. So here multiple choice questions we are given 500 multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. Thus number of F is equal to 900. So P of F is equal to 900 divided by 1400 and probability of F is equal to 9 by 14. Now we need to find what is the intersection of event E and F. So here E and F 500, these are multiple choice easy questions is also included here in easy questions. So intersection is equal to 500 divided by 1400 and the probability of P of intersection is equal to 5 divided by 14. Now according to conditional probability we need the required probability P of E of F, and we know that it is the formula as P of intersection F divided by P of F. So the value of P intersection F 5 by 14 and P of F it is equal to 9 by 14. 14 will cancel to each other and the required answer of this question 5 by 9. Now see your next question, question number 15. It is also an interesting question. And question is saying here, consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes off, throw the die again, and if
एनी अदर नंबर कम्स टॉस पॉइंट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में सपोज किया कि आप डाई थ्रो कर रहे हैं और यदि आपका मल्टीपल 3 आता है, जैसे डाई में 1 to 6 नंबर होते हैं, मल्टीपल 3 में आपका 3 और 6 हो गया। यदि आपका थ्रो में 3 या 6 आता है तो आप अगेन जो है डाई ही थ्रो करेंगे, और यदि कोई अदर नंबर आ जाता है तो आप कॉइन टॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शूज अ टेल। आपको बताना है कि यदि कॉइन टेल शो करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि आपके पास गिवन है कि एटलीस्ट 1 डाई शूज अ 3, एटलीस्ट 1 डाई शूज अ 3। डाई में कम से कम एक 3 नंबर आ रहा है, ऐसा आपको बताना है। अब यहां पर जैसे आपका है कंसीडर throwing a die, a multiple of 3 comes up, throw a die again, and if any number multiple comes, toss a coin. So see here, इसको एग्जाम्पल अकॉर्डिंग जैसे यदि हम 3 मेथड से बताना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 2 और हमने 3 6 यहाँ पर ले लिया है 4 5, तो यदि 3 और 6 आता है तो आप अगेन डाई थ्रो करेंगे, और यदि आपका अदर दैन मल्टीपल ऑफ 3 इट मींस 1 2 4 5 आता है तो आप कॉइन टॉस करेंगे। यहाँ पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी जब आप डाई थ्रो करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 6 होगी, और इस केसेस में जब यदि आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है टॉप 10 होने की। सिमिलरली बी की यहाँ भी आपका यही हो गया, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही हो गया। नाउ यू नीड to find as a simple space according to this. So see, hence with the help of these 3 methods, total simple space will be here। 3 और 6 में आपको अगेन डाई थ्रो करना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Similarly 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 वहां पर हमने लिखा, and if other than the multiple of 3 then we will try toss a coin. So see here 1h 1t, 2h 2t, 4h 4t, 5h 5t। Thus here the simple space will be, it means number of s is equal to 20, and according to question I have taken that if the event coin show the tail and already occurred at taken the event at least 1 die shows up a 3. So see here for the event E there are 1t 2t, at least 1t। आपका जैसे आपका इवेंट है ये कॉइन जो है टेल शो कर रहा है, तो 1t 2t 4t 5t ये हुआ। इसमें जैसे आपने देखा 3 और 6 सब्सेट पे, क्योंकि 3 और 6 में अपन डाई शो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ p इक्वल टू 4 हो गया। सो p ऑफ p इक्वल टू नंबर ऑफ p डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ s, इट मींस 1/5, एंड फॉर दिस इवेंट द इवेंट एट लीस्ट 1 डाई शूज अप a 3। तो यदि आपका जैसे देखना है कि डाई में कम से कम एक डाई 3 शो करता है, तो 3 उसी केसेस में शो कर रहा है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 और 6 जैसे अपन जब शो कर रहे हैं तो 3 1 3 2, एटलीस्ट 1 डाई में आपका 3 आना है। 3 3 ये दोनों में आ सकता है, द फेवरेबल इवेंट एट लीस्ट इन द केसेस ऑफ, एंड 3 4 3 5 3 6 1 is also can be reversed here 6 3 only. So see on this case because 6 is a multiple of 3, फर्स्ट में जैसे आपका 3 और 6 यही आना है, आप ये 4 3 वगैरह आप जो है यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते। On this case number of n equal to 7 and p of n equal to 7/20. Here we need to find according to conditional probability intersection of events E and F. Here E and F, these are the joint set, it means 5, since
ये 10 है आपका एटलीस्ट, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं डैश किया गया है 3 और 6 में होंगे, 3 और 6 दे आर एब्सेंट, सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 0. On this case, P of intersection f is equal to 0 divided by 20 and it is equal to 0. And we get required property according to conditional property. P of f is equal to P of intersection f divided by P of f. So 0 divided by 7 by 20 and the value of this conditional property is equal to 0 is the required answer of this questions. Now here if you see question number 16. Then 16 is given here. If P of A is equal to half and P of B is equal to 0, then we need to find P of A of B. So see here by conditional property we have P of A of B is equal to P of A intersection B divided by P of B. Here the value of P of B is equal to 0. So P of A intersection B divided by 0, it is not defined. ये जैसे it is the answer of this question. And similarly, if question number 17, then if A and B are events such that what is saying here? See, the question number 17 is given as two events such that P of A of B is equal to P of B of A as we are given, then what will the condition next follow as given in your 4 multiple choice. So by the conditional property we know that A intersection B divided by P of B, P of B. Similarly, P of B intersection A divided by P of A. These are same, will be cancelled to each other, and finally we have here P of A equal to P of B. So the multiple choice as D is given in your this questions. Now see for next exercise multiplication theorem on probability. What do you mean by what is multiplication theorem on probability? According to multiplication theorem, here we suppose let E and F be two events associated with a simple space S. आपने सपोज किया कि ऐसी दो इवेंट्स हैं जो सिंपल स्पेस के अंतर्गत हैं. ऐसे केसेस में by the help of conditional probability we know that if already F has occurred, then we need to find the probability of E is equal to P of E of F is equal to P of intersection F divided by P of F. यहाँ पर F has already occurred and provided that P of F should not be equal to 0. On this case, by cross multiplication, we need to find P of intersection F is equal to P of E of F into P of F. It is your first equation. Suppose if reverse events are as, it means that E has already occurred and we need to find the probability of F. Then P of F of E is also equal to P of F intersection E divided by P of E. Here F intersection E and E intersection F both are same and condition that P of F should not be equal to 0. By cross multiplications, here also we have P of intersection F is equal to P of E, P of F of E. What is the difference between first equation and second? In your first, that F has occurred, and in your second, that E has occurred. So in both conditions, if we combine the final result, we have P of intersection F, E intersection F, P of E into P of F of E. आपको ये जानना है, here E has occurred and we need to find the probability of F, events F. Similarly, on that cases, P of F and P of E of F, provided as P of E and P of F should not be equal to 0. This rule is known as multiplication rule of probability. ये रूल आपका मल्टीप्लिकेशन रूल्स के नाम से जाना जाता है. यदि आपका सपोज करो यहाँ पर हमने दो इवेंट को एसोसिएट किया है सिंपल स्पेसेस पर, मोर देन टू इवेंट्स के लिए आपको देखना है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G.
then P of B, and E already has occurred, so P of F oblique E in second cases into, and third here E and F has already occurred, so P of D. और दूसरे केसेस में इसको आप ऐसा लिख सकते हैं P of intersection G, P of D, P of F oblique E, and P of G oblique E F, and so on up to more than 3 events we need to find. Now events. Here we supposing according to your syllabus, suppose E and F 2 events. Then the probability of occurrence of one then is not affected to occurrence of the other. Then these are known as independent events. In generally, we have here suppose E and F are 2 events associated with the same random experiment, and then in this case E and F is said to be independent events if P of intersection F equal to P of B dot P of F. और भी जैसे इसमें फॉर्मूले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के. So see here P of F oblique E is equal to P of F provided that P of E is not equal to 0. Similarly P of F oblique E oblique F is equal to P of E. P of here F oblique E. On this case we have P of F already has occurred, and we will get here P of E is not equal to 0. Similarly P of F oblique E. So this is the cases of independent events. I hope with the help of this you will solve the exercise problems. Thanks.